Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in the last video, we have started our topic which is about the treatment of reserves and accumulated profit and losses. Now in this video, we are going to continue the same topic and we are going to understand the subdivision of that particular topic which is about your workmen compensation reserve, right? So your workmen compensation reserve का जो treatment होता है, उसका जो treatment होता है वो बाकी सब reserve से अलग होता है. And we are going to understand that workmen compensation reserves treatment in a detail, right? So without wasting any time, let's dive into the video. So as we have discussed, we are going to learn about the workmen compensation reserve. First of all, let me ask you, what do you mean by workmen compensation reserve? So as you can understand from the name itself, workmen compensation reserve, वो reserve जो आप as a compensation देते हो अपने workmen को, right? Now, in case when there is a change in profit sharing ratio, how you are going to treat? This is what we are going to understand in this video, right? So for this we have four situations. I am going to explain you everything in a very detailed manner. So be with me and try to understand each and every concept. So there are four situations, right? First situation is when there is no claim, right? Second situation, when claim is less than your workmen compensation reserve, right? Your third situation is when your claim is equals to your workmen compensation reserve, right? And the last one, when your claim is going to be greater than your workmen compensation reserve, right? Now understand, here we are discussing regarding two things. सबसे पहले तो आपको वर्कमेन कंपेंसेशन रिजर्व, ये जो आपका रिजर्व है ये आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी वाली साइड अपीयर करेगा, ठीक है. नाउ द सेकंड थिंग दैट वी आर टॉकिंग हियर इज अबाउट योर क्लेम. अब ये क्लेम क्या है? क्लेम का बेसिकली मतलब है कि आपके पास रिजर्व था, इतने पैसे की जरूरत पड़ गई, मतलब इतना आपको रिजर्व देना है, ठीक है. तो सबसे पहली कंडीशन है जब आपका जो वर्कमेन कंपेंसेशन है उसका कोई भी क्लेम नहीं है, ठीक है. दूसरी कंडीशन है जो क्लेम है तो लेकिन वो किससे कम है? आपके वर्कमेन कंपेंसेशन रिजर्व से. योर थर्ड सिचुएशन इज व्हेन इट इज इक्वल टू योर वर्कमेन कंपेंसेशन रिजर्व एंड योर फोर्थ इज गोइंग टू बी व्हेन इट इज मोर देन योर वर्कमेन कंपेंसेशन रिजर्व, राइट? नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद दीस फोर कॉन्सेप्ट आई वांट टू क्लियर यू वन थिंग. नाउ दैट इज अबाउट योर टू थिंग्स. सबसे पहले तो रहेगा आपका वर्कमेन कंपेंसेशन रिजर्व जो आपका बैलेंस शीट में अपीयर करेगा लायबिलिटी साइड, राइट? Now for this claim, the word that we are going to use, ठीक है, is the provision for workmen compensation reserve. ठीक है, तो इस क्लेम के लिए आप जो हेडिंग यूज करोगे वो यूज करोगे provision for workmen compensation reserve, right? Now let's understand when there is no claim. Let's suppose your WCR is 60,000. This I am taking as a vague, situation. So your workmen compensation reserve is 60,000 and your claim is 0. That means there is no claim. So what you are going to do? You are simply going to divide this workmen compensation reserve among your partners. Let's suppose there are three partners A, B and C, right? Now for this particular scenario, your entry will be your workmen compensation. Now I have in nil space because I have to cover the four conditions. So let's first understand about the claim, then we are going to understand about the journal entry. Okay? So your first situation is when your workmen compensation reserve is there but there is no claim, right? So what you are going to do? You are simply going to divide it among your partners. क्योंकि वो पैसा आपका जरूरत नहीं है आपको उस पैसे की, ठीक है. तब आप क्या करोगे? क्योंकि वहां पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया है तो आप अपने पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे सिंपली, राइट? नाउ योर सेकंड केस इज व्हेन देयर इज अ क्लेम बट इट इज लेस देन योर वर्कमेन कंपेंसेशन रिजर्व. आपका वर्कमेन कंपेंसेशन 60,000 है, राइट? और जो आपका क्लेम है वो 20,000 है. तो अब इस केस में आप क्या करोगे? 20,000 का क्लेम है जो आप प्रोविजन को वर्कमेन कंपेंसेशन में डालोगे. डोंट वरी, आई एक्सप्लेन यू द जर्नल एंट्री. एंड जो बचा हुआ 40,000 है वो करोगे आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट. I repeat, there is a claim of 20,000. Now in this case, what you are going to do? You are going to put 20,000 out of your 60,000 in your claim, which is your provision for workmen compensation reserve. और जो बचा हुआ 40,000 है उसको पार्टनर्स में बांट दोगे, ठीक है. Now let's understand about your third situation. I hope अभी तक आपको पता चल गया होगा. आपका जो वर्कमेन compensation reserve
moving towards your fourth situation when your claim is greater than your workman compensation reserve. मतलब जितना पैसा आपने साइड में रखा था खर्चा उससे ज्यादा आगा, मतलब खर्चा उससे ज्यादा का आ गया. So what you are going to do, for example, your workman compensation reserve is 60 and your claim is of 1 lakh. राइट, तो अब आप क्या करोगे? पहली बात तो हमारे पास जो पैसा था वही कम पड़ गया, तो पार्टनर्स में बटना, मतलब पार्टनर्स में जो पैसा बटेगा उसकी तो बात नहीं उठती. ठीक है, नाउ जो इसमें हमें और 40,000 की जरूरत है उसका हम क्या करेंगे? उसको हम क्या करेंगे? पार्टनर्स से लेंगे. नाउ बिफोर टेकिंग द पार्टनर्स हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालते हैं और फिर ये पार्टनर से चार्ज किया जाता है डेबिट. यहां हम लोग क्रेडिट करते थे और यहां हम पार्टनर से लेंगे. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट. जो 40,000 ऊपर आपकी जरूरत है पैसों की, अब आप उसको क्या करोगे? अपने पार्टनर से लोगे. राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द जर्नल एंट्रीज इन ईच ऑफ दीस सिनेरियोस. राइट, alright, so let's solve one question based upon your workmen compensation reserve condition. Right, now we are going to take one question based upon your 4 condition that we actually learned just now. Right, so the question you can see on your screen: P, Q and R sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Decide to share future profit and losses in the ratio of 4:3:2 with effect from 1st April 2017. Following is the balance sheet extract as on 31st March 2017. तो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 60,000. Now there are 4 condition or cases. The first one, if there is no other information, if a claim on account workman compensation is estimated at 24,000, if a claim on account of workman compensation is estimated at 60,000, and your claim on account of workman compensation is estimated at 75,000. So I would advise you to take the screenshot of the question before we are starting with the question. Right? So let's start. Compensation reserve is of 60,000. If I'm not wrong, yes. Your workman compensation reserve given is 60,000. So this is you are going to use in every case. Case number 1 is if there is no other information. मतलब आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और क्लेम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अब आप क्या करोगे? आप सिंपली इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट अपने पार्टनर्स में बांट दोगे. दिस इज व्हाट वी लर्न इन द फर्स्ट केस. तो आपके पार्टनर्स कौन है? P, Q and R. So you are going to write to P's capital account, to Q's capital account, and to R's capital account. Right? And the ratio is 3:2:1. आप पुरानी रेशियो को कंसीडर करोगे. 60,000 को आप 3:2:1 में बांटोगे तो आपका आएगा 30,000, 20,000 and 10,000. Perfect. Just write a small narration here. So this is your scenario 1. Right? Now moving towards your case 2. Your case 2, if a claim on account of workman compensation is estimated at 24,000, आपका जो क्लेम है वो 24,000 है. ना टेल मी ये कौन सी सिचुएशन है? इसमें आपका जो क्लेम है वो कम है आपकी WCR से. दिस इज योर सेकंड कंडीशन. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट वर्कमैन compensation. Oh my god, I have to write the complete. Just be with me. Let me just write it in a small. Right, so let's just write it a small abbreviation, workman compensation account debit. Right, now there is a claim. उस claim के लिए just recall what I have told you. हम इसके लिए word use करेंगे provision for workman compensation reserve. To provision for workman compensation reserve account. ठीक है, बाकी का बचा हुआ हम अपने बांट देंगे पार्टनर्स में, जो इस केस में 3 पार्टनर्स हैं, तो P, Q and R. I'm going to write down one, just copy for others as well. So your claim is of, so your workman compensation is of 60,000. Your claim is of 24,000. कितना बचा? 60 minus 24. उसको अब आप बांट दोगे बाकी के पार्टनर्स में, किस रेशियो में? 3:2:1. Right? So this is giving you 18,000, 12,000
and 6,000. So this is what you are going to do in your case 2 when your claim is less than your WCR. Now let's move towards two other cases. Let me just rub the board. Alright, so let's move towards your case number 3. Case 3 में आपको क्या बोला है? Your claim on account of workmen compensation is estimated at 60,000. आपका जो claim है वो 60,000 है. Now let me ask you, जो 4 कंडीशन हमने पढ़ी है उनमें से ये वाली कंडीशन कौन सी है? You got it right. तो ये आपकी कंडीशन है थर्ड, जब आपका क्लेम बराबर है आपके वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के. नाउ इसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. सारा का सारा पैसा आप इस्तेमाल कर लोगे क्लेम के लिए, और उसके लिए जो हम यूज करते हैं टू प्रोविजन ऑन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व. यूज 60,000 and 60,000. Write the small narration. Let's move towards your case number 4. I hope आपको थर्ड केस समझ में आ गया है. आपका क्लेम 60,000 है और आपका रिजर्व भी 60,000 है, तो आप अपने 60,000 का 60,000 अपने क्लेम के लिए यूज अप कर लोगे. Now your fourth situation, जब आपका क्लेम का अमाउंट 75,000. Now this is your fourth condition, जिसमें आपका क्लेम ज्यादा है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व से. तो इसमें दो एंट्रीज पास होंगी. सबसे पहली आप अपने ये जो 15,000 की जरूरत आपको और पड़ी है, आप उसको क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू राइट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू राइट अ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू योर प्रोविजन ऑन WCR. ठीक है, तो आपका यहाँ आएगा 75,000 और यहाँ बने 60,000. Now as you can see there is a deficiency of 15,000. यहाँ पर तभी 75 दोनों साइड मैच करेगी, तो आपको कुछ ना कुछ डेबिट साइड डालना है. वो आप क्या डालोगे? रिवैल्यूएशन. This is the new account which you have to open. This is your revaluation account. कि यार जितना था हमें उसे रीवैल्यू करना है कि हमारा 60 नहीं 75 होना चाहिए था. राइट? सो दिस इज योर फर्स्ट जर्नल एंट्री. नाउ योर सेकंड जर्नल एंट्री इन दिस केस. अब ये जो रिवैल्यूएशन का पैसा है ये आप अपने पार्टनर्स से लोगे. क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग पार्टनर्स से देते, मतलब यू डिवाइड करते थे जितना भी एक्स्ट्रा बचता था. तो अब हम क्या करेंगे? अपने नुकसान को पार्टनर से लेंगे. मींस कैपिटल अकाउंट डेबिट, योर Q, your R, और क्या लोगे? रिवैल्यूएशन का पैसा. The first thing which is debit now going to be credit, and किससे लोगे? आपको खर्चा अपने पार्टनर से. कितना है? 15,000. ये 15,000 किस रेशियो में लोगे? 3:2:1. How much it is giving you? 7,500. 5,000 and 2,000. Right? So this is it. We have completed and learned about the 4 conditions of a workman compensation reserve. This video got little lengthy. So this is it for this video. I'm going to put one question in the description for the same. Just go and practice that question and check your knowledge. So this is it for this video. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.